Hello students, welcome to Kenny's Educare, a group of Kenny Solutions. Today we will be starting with lesson number 9, which is motion and types of motion. Now what do you mean by motion? अब suppose you are sitting in a hall, आप अपने हॉल में लिविंग रूम में बैठे हुए हो, okay? And now you are going in the bedroom for studying or for sleeping. ठीक है, तो आप जब हॉल से बेडरूम तक जाओगे ना, you will walk a certain distance and you are moving your body. That time we say that it is a motion. Okay, so you will be studying about different types of motion and how you will come to know which motion is it, whether it is a linear motion, whether it is a uniform motion, non-uniform motion, non-linear motion. So you will come to know about various types of motions in this lesson, and it's a physics topic. So this is the basic concept which is required in your further classes. ठीक है, इसकी ज़रूरत आपको आगे पड़ेगी because जैसे जैसे आप आगे साइंस पढ़ोगे ना, यू विल गेट टू नो मैनी थिंग्स. साइंस के अंदर फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायोलॉजी होता है. नाउ करेंटली यू आर स्टडिंग अ होल साइंस जिसके अंदर सब कुछ इंक्लूडेड है. सो दिस इज़ अ फिजिक्स टॉपिक. ओके, एंड जब आप आगे स्टैंडर्ड्स में जाओगे यू विल हैव टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स. मतलब जैसे आप मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करते हो ना, वैसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा. बट बिफोर दैट यू शुड नो द बेसिक कॉन्सेप्ट, एंड दैट इज़ द रीज़न द लेसन इज़ गिवन हियर. Okay, so try to clear every concept which is there in the lesson. Okay, so let's start. Now you have seen this and you might have done this also. This is very common examples. ये हमने खुद practically किया हुआ भी है. So understanding and observing them is very easy, right? See, in our day-to-day life we see many moving objects, right? हम बहुत सारे moving object देखते हैं. जैसे कि if you see in the picture, the boy is just kicking the football. Then this is the top which rotates. When you throw the ball upward, it comes down again. You might have seen this also rotates. The plane also flies high in the sky. If you might have seen plane ऐसा सीधा उड़ता है, right? तो यहाँ पे आप देखोगे हर जगह पे मोशन हो रहा है. जब आप टॉप को रोटेट करते हो, दैट टाइम it rotates and वो इस जगह से इस जगह तक आएगा ना. ये बॉल भी ऊपर जाके नीचे आ रहा है, राइट? ही इज़ ऑल्सो रोटेटिंग दिस. द प्लेन विल ऑल्सो मूव समवेयर. इट मीन्स एवरीथिंग इज मूविंग एंड दे आर इन मोशन. सो मूविंग ऑब्जेक्ट अगर आपको दिख गया, इट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. Okay, see, moving objects, they are said to be in motion. If you travel from somewhere, suppose you have visited Manali and you live in Mumbai, then you are traveling, it means you are in motion because you are moving. Okay, so you have to discuss which objects in the above picture are in motion and what differences are seen in their motion. Now if you see, आप देखोगे मोशन तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स में आपको देखने मिलेगा, राइट? बट व्हाट इज़ द डिफरेंस? कुछ यूनिफॉर्मली जाएंगे. जैसे एरोप्लेन की बात करेंगे हम, तो एरोप्लेन जो है वो यूनिफॉर्मली मतलब कंटिन्यूसली, ये कंटिन्यूसली जाएगा. ओके, बट व्हेन यू विल सी दिस बॉय, व्हाट विल हैपन? This ball will go up and again it will come down. It means what? इसने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया है ना, बिकॉज ये अपने फिर से वही डायरेक्शन में जा रहा है. इट इज़ चेंजिंग इट्स डायरेक्शन. देन यू कैन से दैट इट इज़ अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्मली मतलब कंटिन्यूसली, नॉन यूनिफॉर्मली मतलब इट इज़ नॉट गोइंग कंटिन्यूसली इन दैट डायरेक्शन. ओके, सो हियर you will see that there are different types of motion. They are moving, the objects are moving, but the motion, the direction is different. Okay, see, what is motion? Now one example is given here. See, while waiting for a bus at a bus stop, other vehicles appears to be in a state of motion, right? आप समझो बस स्टैंड पे खड़े हो and you are waiting for the bus, but when you are standing there you see many vehicles pass by. So you are at the rest position because आप move नहीं कर रहे, आप एक जगह पर खड़े हो. पर for you, जो अदर व्हीकल्स आ रहे हैं और जा रहे हैं, दे आर इन मोशन, राइट? सो ऑन द अदर हैंड, व्हेन यू आर इन द मोशन योरसेल्फ, इट मीन्स व्हेन यू आर इन द बस और इन योर व्हीकल, a still object appears to be moving. Now what does this sentence mean? अब suppose आप बस में बैठे हुए हो and the people outside, they are waiting for the bus.
Okay, once the bus is in motion, you will see that every object, the shop also, that also leaves behind. So you think that they are also moving, right? So a still object means the object that is at rest. Suppose the shop, that also appears to be in motion na, because you are moving. So for example, another example which is given here, the trees are seen to run backward while you are traveling in a train. जब आप ट्रेन में बैठते हो, you want to observe the beautiful nature, right? So at that time when you see, आप आगे जा रहे हो तो and you, for you it seems like कि जो tree है वो पीछे जा रहा है ना? But that tree is at the same position itself. Okay, so if an object is seen by an observer to change its place continuously, the object is said to be in motion. मतलब अगर suppose I am the observer and मेरे लिए ना वो चीज़ का place हमेशा change हो रहा है, it means अगर वो tree है but वो tree का place भी अगर मेरे लिए change हो रहा है, then I'll say that the object that is in motion. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपके लिए मूविंग है, भले ही वो मूव हो रही हो या ना हो रही हो, इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ इन मोशन फॉर यू, you will say that the object is in motion. Moving objects, they are called in motion. Okay, so change of place of an object is called as displacement. अब displacement किसको बोलोगे? Suppose आप लिविंग रूम में होमवर्क कर रहे थे, यू आर डन विद द होमवर्क बट यू हैव केप्ट योर बुक्स देयर इटसेल्फ. तो अब ममा ने आपको डांटा है एंड शी इज़ टेलिंग यू टेक दिस इन योर बेडरूम एंड कीप इन द प्रॉपर प्लेस इन योर कबर्ड. सो यू विल डू दैट. आप लिविंग रूम से बेडरूम तक, कबर्ड तक लेके जाओगे बुक्स को, राइट? तो आपने बुक्स का क्या किया है अभी? यू हैव डन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बुक. ओके, ऑलवेज रिमेंबर, जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह रखते हो, व्हाट यू आर डूइंग? यू आर डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट विच इज़ कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट. अब सपोज आई वॉज सिटिंग हियर, शी इज़ द लेडी सिटिंग हियर एंड आई वॉज सिटिंग हियर इन फ्रंट ऑफ हर. ओके, wait, I am sitting here in front of her on the third seat. Now I want the window seat because I want to observe the natural beauty which is there. Now what I will do, whenever the lady will go, I will just stand from here and go and sit on her place. So what I am doing, I am changing my place. So that is called as displacement. See, you know the concept, changing the place is displacement. Okay, मतलब अभी आप क्या बोलते हो? नॉर्मल इंग्लिश में यू से दैट आई एम चेंजिंग द प्लेस ऑफ द यूनिफॉर्म वेर आई यूज टू कीप इट. ओके, पर व्हेन यू टॉक इट साइंटिफिकली, साइंस के लैंग्वेज में अगर प्लेस चेंज को बोलना है आपको, तो यू विल कॉल इट एज डिस्प्लेसमेंट. ओके, इट इज़ डिस्प्लेसमेंट. सो एन ऑब्जेक्ट इन मोशन इट कंटिन्यूसली अंडरगो डिस्प्लेसमेंट. तो आपको जो भी ऑब्जेक्ट आपके लिए मोशन में होगा, the object that will be moving for you, that object will undergo displacement because that object is changing its position because it is moving, right? So I hope you have understood here the two terms. One is what is motion and the other is what is displacement. Okay, these are the basic things which you should know. Motion matlab moving object. As soon as I tell you motion, your mind should have that it's moving objects, and as soon as I tell you changing place, your mind should have the term displacement. Okay, now remember one thing, this can be asked for fill in the blanks. The continuous displacement of an object is called dash. Displacement मतलब जगह चेंज होना. तो continuously अगर किसी ऑब्जेक्ट का जगह चेंज हो रहा है, so that is called as motion. Okay, this is an important fill in the blanks question. Okay, now see, there are different types of motion. First we will be studying about is linear motion. Now अभी आप ट्रेन को जब देखते हो, उसकी ट्रैक ऐसे सीधी होती है, sometimes it takes turn. Okay, so linear मतलब क्या? एक सीधे डायरेक्शन में जाना is linear motion. See, a train or a moving vehicle on a road may travel in a straight line. स्ट्रेट लाइन आप बोलते हो ना नॉर्मली, तो स्ट्रेट लाइन साइंटिफिक लैंग्वेज में स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोलते हैं? लीनियर मोशन. ओके, तो स्ट्रेट लाइन में या सेम डायरेक्शन में जब कोई भी कार, कोई भी ट्रेन या कोई भी ऑब्जेक्ट जाता है, दैट टाइम वी कॉल द ऑब्जेक्ट इज एन लीनियर मोशन.
Okay, and this motion of an object is called as linear motion. ठीक है, so straight line in the simple language is linear motion in scientific language. Remember this. An object in linear motion will show displacement along a straight line. तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, मीन्स इट इज़ इन मोशन, इट इज़ डिस्प्लेसिंग it is displacing its position. That means it is displacing itself from one place to another. That time you will say, and अगर वो vehicle straight line में जा रहा है, as suppose the train is behind and the track ahead is straight like this, so the train will continuously move in this direction, in the same direction, in a straight line, right? So at that time you will call it as that the train is in linear motion because it is following a straight line. Okay, so if you stand on a chair and you release a ball from your hand like this, it falls to the floor. What do you conclude from this? When you will hold a ball and you will throw it down on the ground, what you will observe? That the ball will directly go and touch the ground, that too in a straight line it will fall, right? It means that the ball is following a linear motion. Okay, now you have to compare the motion of soldiers on parade. This is what we called as parade, and this is how the girl is coming down a slide. They are following a linear motion. Okay, so in both the cases, in this parade also and when the girl comes down from a slide, they are following a same motion. Okay, so the motion of soldiers in a parade is the same. When you see, they will be in a line, in a linear sequence, and they will just follow a straight line. So during that period, not even a slight difference is seen, because parade का मतलब ही है वो एक दो एक, they do this and they walk, right? So इस टाइम पे, परेड के टाइम पे एक भी डिफरेंस आपको देखने नहीं मिलेगा उनमें. However, जब आप गर्ल को देखोगे, when she will come down from the slide, what will happen? That motion is not uniform. ओके, यहाँ पे आप देखो कि कंटिन्यूसली सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं. सो दिस परेड विल बी इन यूनिफॉर्म मोशन. इट मीन्स दे आर इन यूनिफॉर्म मोशन. पर when the girl comes down from a slide, her motion is not uniform. Okay, because the girl will come down faster and faster and her speed will increase continuously na, and then she will come down. So on the other hand, the motion of the girl coming down is non-uniform linear motion. Now linear motion के दो type we studied. One is uniform linear motion, means they are following a same path, and second example of the girl sliding is a non-uniform linear motion because she is not following a straight line and her speed is also not the same. So this example is of non-uniform linear motion because it is following a straight line but the speed is not same. But for parade, everything is same and hence they are following a straight line. It will be called as uniform linear motion. Okay, so these are the two main types of linear motion which we studied. So I hope you are clear with what is linear motion. First of all, what is motion, what is displacement, what is linear motion, what is uniform linear motion, what is non-uniform linear motion. Okay, तो अभी यूनिफॉर्म लीनियर मोशन को आप डिफाइन कैसे करोगे? सी, व्हेन द डिस्टेंस ट्रांसवर्स्ड बाय एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इन यूनिट टाइम इज कंटिन्यूसली द सेम. इसका मतलब अगर कोई डिस्टेंस ट्रैवल किया है किसी ऑब्जेक्ट में और वो स्ट्रेट लाइन में है एक ही टाइम पे. ओके, यहाँ पे टाइम भी मैटर करता है बिकॉज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म है तो टाइम विल मैटर योर. लीनियर है, इट मीन्स वो जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो एक स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा बट द डिफरेंस इज यूनिट टाइम. ओके, तो स्ट्रेट लाइन इन यूनिट टाइम कंटिन्यूसली स्ट्रेट लाइन में होगा और एक ही टाइम पे. दैट टाइम यू विल कॉल इट एज यूनिफॉर्म लीनियर मोशन. ओके, एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में हाउ यू विल डिफाइन? when the distance which is traversed by an object along a straight line in unit time keeps on changing. मतलब यहाँ पे continuously time same था इसलिए आप इसको uniform linear motion बोलोगे. But here because the time is changing with time is changing and it is following a straight line, that time you will call it as non-uniform linear motion. Okay.
सी नेक्स्ट इज नॉन लीनियर मोशन. अभी आपने क्या देखा, लीनियर मोशन के दो टाइप्स थे. वन इज यूनिफॉर्म लीनियर मोशन and the other one is non-uniform linear motion. Now next is non-linear motion. Okay, linear motion I told you, linear motion means a straight line. अब non-linear motion मतलब क्या होगा, it is not a straight line. So how you will define that? The motion of an object that does not move in straight line. Linear में it was moving in a straight line. Non-linear motion में if the object is not moving in a straight line, that time you will call it as non-linear motion. Okay, अब non-linear motion जो है वो कितने types के हो सकते हैं? See, there are many types and you will be studying about that. But before that, tell me what kind of movement does a swing in a park show? This is called as swing. Okay, तो ये कौन सा movement show करता है? What happens here? You go up, then you go back. Right, this is what we do when you swing, right? So the swing always comes back from one end to the other end. First it will go to this end, then to the other end. This is how it happens, right? So it takes about the same time for its swing or oscillation. Okay, the moment you go up and then you go back, it happens in the same time. Okay, so इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, the movement of the swing is called as oscillatory motion, because it is following a same period of time for going up and going back. Okay, so similarly the movement of pendulum of a clock, the wings of a bird, the needle of a swing machine, the vibrating diaphragm of tabla or drum, these are also examples of oscillatory motion. आपने विंग्स देखा होगा ना बर्ड्स का, एक बार ऊपर जाता है फिर नीचे, ऊपर नीचे. सो दैट ऑल्सो अकर्स इन अ स्पेसिफिक टाइम. ठीक है, अब सपोज एक बार बर्ड को अपना विंग्स ऊपर करने के लिए 1 सेकेंड गए, द सेम टाइम इट विल टेक, एंड दैट इज़ द रीज़न it is called as oscillatory motion. Okay, if I tell you about the swing, if I tell you about the wings of the birds, if I tell you about the needles of the swing machine, it goes up and down, right? And it follows the same period of time. So that is called as oscillatory motion. So oscillatory motion is a type of non-linear motion, because your motion will occur but it will not occur in a straight line. And if you see, the oscillatory motion is not taking place in a straight line. वो एक बार पीछे जा रहा है, randomly कहीं पे भी जा रहा है, right? So this is called as oscillatory motion. Now how you will be defining it? The motion of a body that is oscillating, that is swaying back and forth, is called the oscillatory motion, because here the swings are oscillating. They are moving ahead, then back, forth and back motion. Okay, so always remember about this oscillatory motion. Now I told you another example of the pendulum also, right? So ये जो आपको दिख रहा है, this is called as pendulum. ये एक बार यहाँ जाता है, फिर यहाँ, यहाँ, फिर यहाँ. So it also follows the same path. Okay, so hands of a cock moves in a circular manner. Now if I tell you about the clock, suppose this is the clock. Okay, अब यहाँ पे ये बज रहा है. So what will happen? The clock moves only in circular motion, right? So that is the movement of the hands of the clock is in circular motion. Similarly, if I tell you about the fan also follows a circular motion, because it moves in circular, right? So the hands of clock, it moves in circular manner. Similarly, the fan, a giant wheel, this is the giant wheel. I hope so you might have set in this. So this is a giant wheel, this also follows a circular motion na, goal goal. Then a merry-go-round completes each round along a circular route. So they follow a circular motion. So one motion which we studied was oscillatory motion. Second one is circular motion. You need to know the examples for each of the motions. Okay. Now see, which are the other examples of circular motions which can you give? You know the tires of the bicycle and car, they rotate, so they also go with a circular motion. Okay, then the wheels, they also follow a circular motion. Okay, so we see from this examples of oscillatory motion and circular motion that some objects, they complete one round means one oscillation. Okay, if they complete, suppose you are sitting here
Now from here the giant wheel starts, and again it comes back to this position. That means you are oscillating, and that is the one oscillation that you have completed. ठीक है, तो इट अकर्स इन अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम. यहाँ पे जो टाइम होगा फिक्स्ड होगा. सपोज यू आर यर, सो आफ्टर 2 seconds you will be here again. So after 2 seconds again. So this is how they follow a fixed period of time. Okay, for example you can also take the minute hand. Okay, the minute hand of a clock, it completes one round in exactly 60 minutes, right? 60 minutes होता है 1 hour में, तो the minute clock it takes only 60 minutes every time. So and also while a merry-go-round also completes every round in the same period of time, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, periodic motion, because they have a set of motion, fixed set of motion, and that is dependent on time, and that is the reason this motion is called as periodic motion. Okay, now see, you have to use your brain power and you have to tell me in which musical instrument can you see oscillatory motion. See, this is oscillatory motion. How you will define it? Motion of the body that is oscillating, it means it is going back and then it is coming forth, back and forth motion. So if you see here, this is also one of the oscillatory motion, right? This is also fan जो है is a circular motion we saw. Then the wings of the birds, they follow oscillatory motion because they go up and then go down. If you can see here, the wings are up, then they go down. This is how they follow, right? So the motion of an object along a circular path, मतलब any object that is following a circular path, that time that object is said to be in circular motion. Okay, and the motion of an object which passes through a certain point again and again. Suppose you are visiting somewhere and you have to visit, this is the place where you have to visit. Okay, now every day you will visit here at 11, and you know it takes 15 minutes from here to reach. So you have to reach at 11:15. So from here you will move out at 11. आप यहाँ से 11 o'clock को निकले हो एंड डेली फिक्स्ड पीरियड पे आप 11:15 को ये पॉइंट पे रिच कर रहे हो डेली. इट मीन्स यू आर फॉलोइंग अ सर्टन टाइम लिमिट. सो दिस विल बी कॉल्ड एज पीरियोडिक मोशन. ओके, सो आई होप यू आर क्लियर विथ सर्कुलर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन एंड पीरियोडिक मोशन. Now you have to tell me which type of motion are seen when a girl rides her bicycle as shown. She is just following this path. Okay, the path that is written as 8. Which is the path she is following? She is following a non-uniform linear motion, because she will be just going through the same path but the motion will be different, and that is the reason it will be called as non-uniform linear motion. Okay, now see, what the girl is doing in the first picture is she is chasing a butterfly in a garden, right? So do you also run a definite path in the same direction all the time? Butterfly same direction में जाती है क्या हर बार? No ना, she will go anywhere she likes. So she will follow different direction and you will also follow her if you want to catch her, right? So a butterfly constantly flits from one flower to another, and यहाँ पे इसका जो direction है, इसका जो motion है, that is not fixed, that is not definite. Okay, and इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? Random motion, because she can go anywhere anytime. The motion, the path is not fixed. The spelling of random is RANDOM. It is wrong here. Okay, so the spelling is this, random motion. So when you see people playing football, that time you will see that their motion is also not uniform. So they have a random motion because they can go anywhere. Okay, then the motion of a crawling baby or a wandering animal is also random. Crawling baby matlab the baby which just starts to walk. Okay, the baby's motion will also be random because he will go here and there. Okay, and when they play, they go outside and they will go anywhere, right? The pet, the dogs and cats that you are having, they also go anywhere. So they are having that random motion. Okay, so how you will define random motion? The motion that changes its direction and speed continuously.
ओके तो रैंडम मोशन में क्या हो रहा है, डायरेक्शन एंड स्पीड दोनों भी कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न यू विल कॉल इट एज रैंडम मोशन, बिकॉज रैंडमली, अभी आपका कभी ओरल होता है तो टीचर्स जस्ट रैंडमली सिलेक्ट्स यू एंड टेक्स योर ओरल, राइट, किसी भी बच्चों को बुलाती है वो, शी इज़ नॉट फॉलोइंग अ डेफिनाइट पाथ, so that is also called as, teacher says I'll call you randomly one by one because she will be calling from anywhere. Okay, so that is random motion. Now what do you mean by speed? See, a bus covers the distance of about 200 kilometers from Solapur to Pune in 5 hours. Now whenever you visit, ये आपने बहुत बार सुना होगा कि मुझे अभी इतने घंटे लगने वाले हैं, दिस मच किलोमीटर द बस विल बी कवरिंग, राइट. सो यहाँ पे क्या बोला गया है, एक बस डिस्टेंस कवर करेगी कितना, 200 किलोमीटर का, कितने टाइम में, 5 आवर्स में, एंड कहाँ से, सोलापुर से पुणे. ओके, सो हाउ मच डिस्टेंस डज द बस विल कवर इन 1 आवर, व्हाट डू यू थिंक, कितना डिस्टेंस वो 1 आवर में कवर करेंगे, 5 आवर्स में दे आर कंप्लीटिंग 200 किलोमीटर. Okay, so for this, for calculating the hour, we need to solve one example, and we have to take the ratio of the distance which is traveled and what is the time required to travel the distance. Okay, so there is one formula which you should know is speed is equal to, because you are calculating speed, the formula for speed is equal to distance travel, मतलब आपको कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है आपने, 1 आवर बाद आपको देखना है कितना डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया है एंड कितना टाइम आपको लगा है उतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए. तो सपोज यू हैव ट्रैवल्ड फॉर 1 आवर, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज़ 1 किलोमीटर एंड इट टुक 1 आवर. तो व्हाट विल बी द रेशो, 1. इट मीन्स आपने कितना किलोमीटर कवर किया, जस्ट 1 किलोमीटर. सपोज़ अभी आपने 1 आवर में, यहाँ पे आई विल राइट 50 किलोमीटर आपने कवर किया है इन 1 आवर. तो व्हाट विल बी द आंसर, आपने कितना कवर किया, स्पीड क्या थी, द स्पीड वॉज 50. ओके, दिस इज़ हाउ यू विल कैलकुलेट. नाउ हाउ यू विल डिफाइन स्पीड, द डिस्टेंस ट्रांसवर्स्ड मीन्स ट्रैवल्ड. तो द डिस्टेंस ट्रांसवर्स्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम में, उसको हम बोलते हैं स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. एंड यूजिंग दिस फॉर्मूला यू विल कैलकुलेट स्पीड. एंड व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ द स्पीड, फॉर एग्जाम्पल फॉर द डिस्टेंस वी राइट किलोमीटर, फॉर टाइम वी राइट आवर्स. सेम वे फॉर स्पीड यू विल राइट किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड. अगर आप सेकेंड्स के बेसिस पे काउंट कर रहे हो तो यू विल राइट मीटर पर सेकेंड. अगर आप आवर्स के बेसिस पे कैलकुलेट करोगे तो यू विल राइट किलोमीटर पर सेकेंड. ओके, नाउ ऑलवेज रिमेंबर दैट अ मूविंग ऑब्जेक्ट may not have only one type of motion. Moving object can go in different direction also. Okay, and ओके तो यहाँ पे हमने कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन पढ़े. वी स्टार्टेड विथ लीनियर मोशन, हमने देखा उसमें 2 टाइप्स का होता है, वन इज़ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एंड द अदर वन इज़ नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, राइट. देन वी स्टडीड अबाउट नॉन लीनियर मोशन, जहाँ पे हमने पढ़ा रैंडम मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशन. सो आई होप यू आर क्लियर विथ ऑल द टाइप्स ऑफ मोशन दैट वी फॉलो. ठीक है, सो व्हाट वी स्टडीड, ऑब्जेक्ट्स इन मोशन आर दोज दैट चेंजेस देयर पोजीशन कंटिन्यूसली. तो कोई भी ऑब्जेक्ट को आप कब बोलोगे कि वो मोशन में है, अगर उसका प्लेस चेंज हो रहा है तो, अगर उसका पोजीशन चेंज हो रहा है तो. ओके, सो वेरियस टाइप्स ऑफ मोशन दैट वी स्टडीड वर लीनियर मोशन, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, oscillatory motion, circular motion, periodic motion and random motion. So these are the different types of motion that we studied today, right? And we studied about speed, how you will calculate the speed using the formula speed is equal to distance traveled upon time taken to travel the distance. So how you will define speed? The distance traveled by an object in unit time is called its speed, and the time which is required टू ट्रांसफर्स अ सर्टन डिस्टेंस, एक डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए जितना टाइम जाएगा वो किस पे डिपेंड करेगा, इट विल डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि वो ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है, उस बेसिस पे आप कैलकुलेट कर पाओगे कि आप कहीं पे कितने टाइम में पहुंचने वाले हो. ओके,
So I hope you are clear with all the basic concepts and all the different types of motions which I have taught. Okay, so we are done with this lesson. Thank you everyone.